welcome to today's open discussion. And today we are going to talk about a very special topic. This topic is special because we are like first time discussing something like this in an open discussion. So we are going to talk about the energy forecast and prediction for the year 2024. I don't know how many of you know, but Akarma is also a numerologist. So numerology is something that he does out of, sheer passion. And this is something which he was interested as, um, as a subject when he was in his college days. He started reading about all of these things, and slowly here and there he would just apply those things and speak to people. Later on, he also took some guidance and studied numerology in depth. And those of you who know that he practices it approaches him, but this is not something that he pushes out. This is something mainstream that he does, but his knowledge in this space is vast and it's very valuable. So he will share with you guys the forecast and predictions for the year 2024. So over to you, Akarma. The stage is all yours. Great. Thanks, Anamika. And am I audible properly to everyone? Yeah. Okay. Yes, Akarma. Okay. Great. Yes. So, like Anamika said, that I do this out of hobby, out of that, not as a profession, you can say. So it's more than hobby. Um, those who know that I do this, they approach me and I do their readings and prepare their charts and all that. But that's not something which I promote as like a mainstream profession or something like that. So yeah, practicing wise, I would say it would be more than 25 years that I have been practicing, doing all this. So I'm quite fascinated by the concept of numerology. I don't know how many of you. So just a show of hands, how many of you know anything about numerology? When I say anything, I don't mean like you've heard about it. Like you know something, like you know some concepts of numerology as such. Yeah. So Anu, Vanshika, anybody else? Anushka also says that she knows something. Okay, great. Good, good. So I won't be going in the theory and concept side of things today. This is not like a class or a lecture on numerology as such. Um, but this is more to know that what 2024 is all about. And just a little bit, not a deep concept, but at least basics, the basics. I will see where I need to share, but for you to understand what I'm going to share doesn't really require that. So yeah, so basically, okay, a little bit of basics about numerology is that numerology is a number-based science. It is not well known ki who discovered numerology, but if you remember Pythagoras, who you would have you know the Pythagoras theorem. So the guy who invented the Pythagoras theorem. So Pythagoras is kind of um, attributed ki he was the one who invented. So this is kind of what we say a general consensus. By consensus, people agree that about 2,500 years ago, Pythagoras created numerology. This is a numbers-based science. He was a numbers guy. He was a mathematician. So that is what the basics of that is. As such, numerology is a vibrational science. So that is why I am very fascinated by it. Lately, we have been talking about the concept of resonance quite a bit as well. We talked about that earlier.
as you know. So the direct correlation is that we know that everything in universe is vibrations. Everything vibrates, whether it is the table, chair, trees, you, the entire earth, sun, moon, every object, every matter vibrates. That is a well-known scientific fact. Um, everything vibrates at its own frequency. Now the thing is that with the matter, with the rigid matter, the frequency stays the same throughout their lifetime. So if you measure the frequency of a door by using the right kind of equipment, right kind of meter, you will get a certain number, whatever, I mean, 50 hertz or 60 hertz or whatever, right? So a number will come, and that will be constant. That is what will stay constant until the door is gone. तो वो fixed रहने वाला. But in case of humans, we have been given a certain consciousness, certain intelligence by which we can change our vibrational state. That is a superpower that we have, which is not there in any other matter. They are fixed. Although we also vibrate, but when we are in the emotional state of fear or guilt or shame, then there is a certain way we vibrate. All this is available. You do your research on Google, you will find there is vibrational chart that is there, which will tell you fear की ये frequency है, guilt की ये है. How they have done it, again, survey based scientific data available. When people are in a certain state, they put the electrodes and all those things, they measure, and with the with the collection of data in the community, then they find out that when people are in such emotional state, their body, they vibrate in this frequency. So people who are in a state of acceptance, calm, joy, happiness, they are in a higher vibrational state. People who are in experiencing anger, depression, sadness, fear, guilt, they are in low vibrational states. But everything is vibrating. So it's all vibrational. Numerology is also vibrational science. So each number has a certain vibration. That is why if you noticed, some people, they change their name. I think let's say Amrita may, somebody will put two A's because a numerologist will tell them that uh, if you put two A's, then it now matches your core number or destiny number. So वो सब figure out करते हैं. उसके basis पे somebody will change the spelling of the of your name and say this now this is good. But what happens is, let's say even if we put two A's in Amrita's name, people will continue to say her Amrita, but they should say Amrita. That is how numerology will take effect. So even if you are just only changing the name on documentation and not in your speech, in your voice, then there is no effect. So this is a less known fact about numerology. लोग जाके नाम तो चेंज करा लेते हैं, pronunciation चेंज नहीं करते. So pronunciation is the most important thing in numerology. How you pronounce the name. It's not about कि दो I लगा लो, दो T लगा लो, दो A लगा लो, H की जगह ये कर दो. So it's like that. So you have to change the pronunciation also. Without pronunciation change, it doesn't matter. Same way, let's say somebody has given a name to you, but you are given a pet name. So somebody is calling you by a different name at home or something like that. Then it has a certain vibration. So in numerology, we check that does that vibration matches your core number and destiny number. Is it good for you or not good for you? So that is very important as well. It's not just कि number बस नाम एक choose कर लो. तो
तो वहाँ वो चीजें देखने की जरूरत होती है. इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस. एट द एंड ऑफ द डे न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट वाइब्रेशंस. एंड and it's not about changing the name. Even if you don't change the name on your passport or your voter id or aadhaar card or any, it doesn't matter. Kuch zarurat nahi hai, as long as you change it in your day to day communication. Let's say someone, we say ki their full name, their first name is useful in their personal life, but their full name to be used in their professional life only when they are called like that. Let's say, it's a, oh, किसी का let us say Tarun, right? So if we say if we say Tarun in personal communication, personal day-to-day life, Tarun name suits that way. So it's not clashing; it's compatible. But Tarun as a name in profession, we might say, like, I'm not giving any kind of advice here, Tarun, I'm just taking an example. So I've not done any kind of chart preparation or anything, so so don't take this as a feedback or anything, just as an example I'm saying. So profession may, we will say कि Tarun will only be achieving professional success and all that if people call him Tarun Malik, full name. फुल नेम उसका जब लेंगे तो वो चलना चाहिए. सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ही शुड बी एड्रेस्ड एज तरुण मलिक, नॉट एज तरुण. तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं न्यूमरोलॉजी में, जो लोग समझते नहीं है. जो मैंने जो चीजें नोटिस की है ना, पीपल डोंट हैव अ फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थिंग्स. ये कर क्यों रहे हैं, वो बस कर लेते हैं जाके, क्योंकि किसी ने बोल दिया तरुण में दो टी लगा लो, इसमें दो आर लगा लो, इसको एक ही जगह आई कर दो, इसको ऐसे स्पेलिंग चेंज कर दो, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है और बाकी सब लोगों को भी बताना कि अब से मुझे ऐसे बुलाना है आपको. तो ये कोई करता नहीं है, सिर्फ जाके लिख लेते. तो ये डॉक्यूमेंटेशन में चेंज होने वाली चीज नहीं है. दिस इज वाइब्रेशनल. इट इज अबाउट हाउ वी एड्रेस, हाउ वी स्पीक. So vibrational changes are very important. This is why I like this science. As I said, everything is vibrations, and we can make impact on our communication, on our um, you know many aspects of our life by that. ठीक है, तो ये तो another basics is that in numerology there are only 9 numbers that we consider. Zero is not considered in numerology. One to nine, 9 planets, 9 numbers. Although हम 9 planets बोलते हैं, but they are not planets, so to speak. तो जैसे सन और मून भी हैं इसमें. सन और मून तो प्लैनेट नहीं है, साइंटिफिकली स्पीकिंग वो प्लैनेट्स नहीं है. बट न्यूमरोलॉजी के टर्म्स में, न्यूमरोलॉजी में जब हम बात करते हैं, आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करोगे या न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे बात करोगे, वो इस कम्युनिटी में, न्यूमरोलॉजी की कम्युनिटी में, इनको हम प्लैनेट्स या ग्रह ही बोलते हैं. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय साइंटिफिक डेफिनेशन की सन और मून तो प्लैनेट्स नहीं है, वो तो ग्रह नहीं है. हाँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसे ही बात होती है. तो इसलिए डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ डिबेट और एनीथिंग लाइक दैट. डोंट गो इनटू दोस दैट काइंड ऑफ करेक्टनेस देयर. तो जरूरत नहीं है. इट्स मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग. हाँ ठीक है, इसमें ये टर्मिनोलॉजी चलती है. हम 9 planets बोलते हैं, 9 ग्रह बोलते हैं. सबके सब ग्रह नहीं है. आई गेट दैट. इनफैक्ट ये राहु और केतु भी यूज होता है इसमें. राहु और केतु तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो फिजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करते. तो लेकिन वो भी हम ग्रह की तरह इसमें माने जाते हैं. राहु और केतु को टेक्निकली न्यूमरोलॉजी में नोड्स बोलते हैं हम. तो दे आर टू नोड्स, बट वो तो फिजिकली भी एग्जिस्ट नहीं करते. अभी सन और मून पे तो हम फिर भी डिबेट कर रहे हैं कि वो प्लैनेट है या नहीं है, बट एटलीस्ट फिजिकल तो है. राहु और केतु तो फिजिकल भी नहीं है. तो तो दैट इज जस्ट व्हाट वी से कि इनका इफेक्ट है. तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो एक वाइब्रेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. और उनको हम ग्रह, जो बोलचाल की भाषा है, नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, उसमें हम उनको ग्रह या प्लैनेट्स में रिफर करते हैं. तो दैट इज हाउ इट इज. सो डोंट वरी अबाउट द साइंटिफिक करेक्टनेस ऑफ दीज थिंग्स.
तो अब उनकी साइंटिस्ट की अपनी लैंग्वेज है, न्यूमरोलॉजिस्ट की अपनी लैंग्वेज है। तो दैट्स द बेसिक्स इसमें। सो 9 जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर 1 रिप्रेजेंट्स सन, नंबर 2 रिप्रेजेंट्स मून, नंबर 3 रिप्रेजेंट्स जुपिटर, नंबर 4 represents Rahu, 5 represents Mercury, 6 represents Venus, 7 represents Ketu, 8 represents Shani, and 9 represents Mars. तो ये है। अब इसमें ऐसा नहीं कि अरे प्लूटो तो छूट गया या ये तो छूट गया, तो वो सब नहीं है इसमें, ठीक है? वो अलग चीजें हैं, ये अलग है, इसको ऐसे नहीं देखना है, इतना ही है। तो अब इसमें तो ऐसे प्लैनेट्स कैसे करेंगे, तो अर्थ भी नहीं काउंट हुई है इसमें अम, तो वो भी है। हम तो अर्थ पे हैं, बट इन 9 ग्रहों में तो अर्थ भी काउंट नहीं हुई है। तो दिस इज ऑल व्हाट द बेसिक्स आर। एंड वी कंसिडर एवरी प्लैनेट, एवरी ग्रह हैज इट्स ओन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, एंड देन इट interferes, influences us, because we are also vibrational beings, everything is vibrational। तो वाइब्रेशनल इंटरफेरेंस का फिनोमिना तो आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा या देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, साइंस बैकग्राउंड से जो होंगे तो यू नो वाइब्रेशनल इंटरफेरेंस। अदरवाइज यू वुड नो कि आपके घर में माइक्रोवेव चल रहा है, आप अगर मोबाइल लेके उसके पास जाते हो तो देयर इज एन इंटरफेरेंस, या टीवी के आसपास कोई ऐसे इक्विपमेंट आते हैं तो देयर इज इंटरफेरेंस दैट इज देयर, बिकॉज आपको ये दिख नहीं रहा है, लेकिन वेव्स तो है ही ना। um, so microwave is also there, all types of waves are there that are used, the radio waves, microwaves, all these type of waves that are there, वो हमें दिख नहीं रही हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि वो है नहीं, वो तो है। और जहां पे ज्यादा ये चीजें रहती हैं वहां पे इंटरफेरेंस होती है। दिस इज वाई इफ यू विल नोटिस कि हम जब बहुत बिजी जगह पे होते हैं जहाँ पे बहुत गैजेट्स हैं, बहुत 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 ज्यादा, लेट्स से टीवी टावर्स, मोबाइल टावर्स एंड ऑल दैट, वहां पे आपको एक लेवल का अनरेस्ट सा फील होता है, एंजाइटी सी फील होती है एंड ऑल दैट। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस वाइब्रेशनल इंटरफेरेंस। ऐसे ही आप कभी किसी गांव में जाओ, किसी पहाड़ पे जाओ, वहां पे कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है ठीक से, phones के कनेक्शन नहीं है, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट फील सो रिलैक्स्ड एंड सो डाउन एंड एवरीथिंग, यू जस्ट फील वाओ कितना अच्छा है। वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स की इंटरफेरेंस कम, दीज थिंग्स आई एम शोइंग यू दिस थिंग क्योंकि आपने ये एक्सपीरियंस किया है। तो ये सोचना कि सन की वाइब्रेशनल स्टेट या मून की वाइब्रेशनल स्टेट, या ये सब हमारे ऊपर इसका ये एक इग्नोरेंस की बात होगी। ये बोलना कि इन चीजों का इफेक्ट नहीं, ये इग्नोरेंस की बात है। यू ऑल्सो नो वी डू फुल मून मेडिटेशन। फुल मून का इफेक्ट एवरीवन नोज दैट whenever the moon is full you have big tidal waves, so moon pulls water। तो जब नो मून होता है तो वेव्स उतनी नहीं होती हैं, जैसे ही फुल मून होने लगता है, फेजेस में आने लगता है, मोर टाइडल वेव्स एंड ऑल दोज आर हैपनिंग, राइट? सो अगर मून ओशन बॉडीज में पानी को खींच रहा है, उस पर इफेक्ट आ रहा है, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि हम पे नहीं आएगा? दिस इज साइंटिफिक फैक्ट कि अवर बॉडी इज मेड ऑफ 70-80% वाटर। तो जब उस पे आ रहा है तो हम पे नहीं आएगा, ये कैसे? हाउ हाउ इज दैट इवन लॉजिकल टू बिलीव कि हम पे मून का कोई इफेक्ट नहीं है, फुल मून पे हम पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। तो all these things have got good explanation, good logic and all that, only if we understand this कि ये कैसे है, क्या है and all that, then we understand these things। Yes, Natasha, you have a question? So actually, I just wanted to understand that you just said that uh, during full moon, the tidal waves and all that are high.
But sir, isn't that just because of the gravitational pull of the moon? Because we don't see anything like that happening on the in the wells or even in a bucket of water. So how does Exactly, that exactly. justify? That's no, I'm just only using that as an example. That is not about the vibrational state. I'm just using that as an example that Okay. if the moon can cause that, moon also causes a pull uh, on our emotional state. So many people experience a shift in their mood during full moon or the phases of full moon. But many a times they are not able to compute that why this is happening. कि कुछ हुआ तो है नहीं, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, but I don't know why I'm feeling down or I'm feeling this way, that way. So this is about mindfulness. This is about knowing कि ऐसा भी होता है, and and knowing कि these things, these bodies do affect us vibrationally or gravitational pull or anything like that. Assuming कि ये तो बस है, इनका हम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं है, देयर इज नो वाइब्रेशनल इंटरफेरेंस हैपनिंग, देयर इज नो ग्रेविटेशनल पुल हैपनिंग, ये तो बस बाहर उनके ऊपर ही हो रहा है, हमारे ऊपर कुछ नहीं हो रहा, दैट वुड बी अ लेवल ऑफ इग्नोरेंस. So, but Earth is three-fourth made up of water. Maybe that's why the sea के ऊपर इतना effect होता है. But दूसरे water bodies के ऊपर like well हो या even bucket of water as I said, शायद इन bodies के ऊपर इसलिए नहीं होता है. I don't know. I could be wrong. It's just a thought. हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है. um, anyway, let's come to the topic um, of today. मैं तो एग्जांपल लेके एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था. तो नाउ व्हाट आई वाज सेइंग इज कि देयर आर 9 planets that we consider. तो इसमें जो 8th नंबर पे है वो है शनि, सैटर्न. तो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट टुडे इज बिकॉज 2024 को जब हम टोटल करते हैं, सो न्यूमरोलॉजी में एज आई सेड कि इट्स ओनली 1 to 9. तो न्यूमरोलॉजी में हम कुछ भी जब कैलकुलेट करते हैं तो नंबर्स को ऐड अप कर देते हैं. तो 2024 को जब हम ऐड करते हैं 2 + 0 + 2 + 4, द टोटल कम्स आउट 8. Or agar if the total comes out as a 2-digit number, then we add those 2 digits again. So we always come to 1 digit, final one, to figure out ki what's the final number that comes out. So 2024 का जो total आता है वो आता है 8, which means this is a year of शनि. उसका जो इफेक्ट है वो थ्रू आउट पूरे साल रहने वाला है. What is the big deal about it? What is it that we need to know about this thing? So one of the things is कि Shani, I feel, is one of the most misunderstood kind of the planet, or very feared one, so to speak. जैसे ही उसका नाम आता है तो हम उसको डर से ही सुनते हैं. Most people are afraid of this कि ये है, ऐसे है, and all that. Um, let me ask you guys only. So when you hear, what is your अंडरस्टैंडिंग? तो आप लोग आज जो आए हो ये चीज सुनने के लिए, तो आप लोग किस इंटेंशन से आए? व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट शनि? हार्ड वर्क, ओके. Audible? सॉरी, मौसमी, सुना नहीं मैंने, क्या बोला? No, I didn't say, but I will say now. Shani ओके. represents karma devata, uh, kind of a person who is very active on giving the karma fal. We do good, we get the good. We do evil, we get the evil, and he is very instant in giving that. So people are afraid of him. That's why, like, the fear with Shani goes, because people have always
seen the or felt the side the evil करने पे जो उनको evil face करना पड़ा है, जो उसका फल भोगना पड़ा है, तो people have magnified that and they believe that's why Shani is, something Bad to be feared about and they are to be paranoid about feared. it. But they have not Exactly. seen ki doing good, Shani Devta has also done good. So बिल्कुल that part सही is बात totally ignored, and hence this is what the imbalance of understanding Shani Devta has happened. है, बिल्कुल सही बात है. And this is what Mashmi said. So yes, Anu said transparency and Natasha said planet of discipline. Yes. So शनि को अगर एक वर्ड में हम डिस्क्राइब करेंगे तो शनि इज अ जज. तो उसका काम है, उसको जजमेंट का काम दिया गया है. तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम अपने कर्मों से तो नहीं डर रहे हैं, हम उससे डरने लग रहे हैं कि उसने वो अब हमको उसका फल देगा, तो हमें उससे डर लग रहा है. जबकि डरना चाहिए हमको अपने कर्मों से, डरना चाहिए हमको अपनी थॉट से, अपने अपने एक्शन से, अपने इंटेंशन से. The judge is only giving the judgment based on what we are doing, saying, thinking, intending and all that. तो हमारा ध्यान उस पे तो है नहीं. हमारा ध्यान इन चीजों पे ना होने की बजाय हमारा ध्यान इस चीज पे कि अब मुझे इस ये ऐसा फल मिलेगा, अब मुझको ऐसा ये मिलेगा. तो वी आर fearing the judge, whereas the judge is only doing the job. So I feel that a lot of misunderstanding is there about it, to the extent to the extent कि uh, शनि देवता की जो मूर्ति होती है वो लोग बोलते हैं कि घर में भी नहीं रखते. उनकी पूजा घर उनको घर में भी नहीं रखते. भारी भारी पूजा करके आ जाओ. तो इतना फियर है उस चीज का कि समथिंग दैट इज टू बी अवॉइडेड, उसको दूर ही रखो. तो जितना जितना मतलब वो दूर रहे उतना ही बढ़िया है. दूर दूर से ही बस उनको ऐसा क्या ना, यू आर जस्ट शोइंग योर रिस्पेक्ट. बट वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो टेरर है. बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये तो उनका काम है, ये तो उनको काम दिया गया है जजमेंट करने का. तो हम जज का जो काम है उससे हम डर रहे हैं. क्योंकि वो काम का जो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है वो हमें पसंद नहीं आ रहा ना. उसका रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा तब तो हमें जज बहुत अच्छा लगेगा. और वही जब जज ने हमको पनिशमेंट दे दी तो हमें जज से डर लग रहा है. लेकिन हमें ये नहीं दिख रहा है कि वो तो अगर जो हमको रिवॉर्ड दे रहा है या पनिशमेंट दे रहा है वो तो हमारे ही रीजन से दे रहा है, जो हम कर रहे हैं उसी से दे रहा है. बट वो नहीं है ना, वो ध्यान में नहीं है किसी के. तो इट इज ओनली अबाउट द जजमेंट. सो शनि इज अ जज. ही इज he believes in fairness. He believes. So when Anu said hard work, yes, hard work. Again, hard work is not कि गधा मजदूरी only. हार्ड वर्क का मतलब है कि शनि डजंट बिलीव इन शॉर्टकट्स. तो आप ये सोचो कि ऐसा कुछ स्कैम कर लूं और आज ही ऐसा कुछ स्कैम करके ना करोड़ों रुपए बना लें या ये कर ले वो कर ले. दैट इज हार्ड वर्क का मतलब नहीं कि आप आप बिल्कुल गधे की तरह काम करोगे तभी नहीं. दैट्स नॉट व्हाट हार्ड वर्क टू बी इंटरप्रेटेड एज. हार्डवर्क मतलब कि आपको जो you need to earn with fair means. So do not adopt unfair means. Do not procrastinate. Do not wish. Do not have a wishful thinking. ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कुछ ना करना पड़े, थोड़ा सा काम करें, हम 2 रुपए का काम करें लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्ट करें 100 रुपए का. तो दैट इज नॉट व्हाट शनि फेवर्स. तो उन लोगों को डर लगता है इस चीज से, क्योंकि उनके मन में ही ये चीज छुपी हुई है. तो पीपल हु आर फेयर, हु अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, हु आर नॉट प्रोक्रेस्टिनेटर्स, हु आर डिसिप्लिन्ड, हु आर ऑर्गेनाइज्ड, कोई इशू है ही नहीं उसमें. तो this entire year is going to be that. So what is important for us to know is
in order to achieve success in anything that we do, personal life, professional life, uh, if you want to do whatever, एंड और सक्सेस का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है, सक्सेस में मेरा कोई वो ये नहीं है कि आई डोंट मेजर सक्सेस बाय एनी काइंड ऑफ कि पैसे या रिसोर्सेज, नहीं, सक्सेस का मेरा मतलब है कि you intended to achieve this and you achieved that. That is what I mean by success. That could be anything. That could be a material, that could be an emotion, that could be whatever. That could be better health, that could be a better relationship, whatever it is. Whatever you decided ki I want this and you achieved that. That to me is success. So in order to do that, इस साल शॉर्टकट से काम नहीं बनेगा. So this year is all about taking action, not being in a procrastination mode, um, understanding, making the right kind of plans, strategizing, being disciplined, being structured, being organized. All these words that I'm using, this is all through and through Shani. So anybody who feels कि they are not disciplined, they are not organized, they are not structured, they are not this, they are not that, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस साल. और चीज ये है ना कि 1 year is equal to 12 months, which is equal to 365 days, and this year तो we have 366 days. तो it's not a matter of चलो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा. This is going to last for 12 months. This is going to last for 366 days. तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, unless you recognize कि you have these issues and then you do something about it. सिर्फ recognize करके बैठोगे और यही सोचोगे कि हाँ आई नो कि आई डोंट हैव दिस, आई नो, तो होने वाला नहीं है. इस साल बहुत सारे लोग इस साल बहुत नीचे भी जाने वाले हैं और बहुत सारे लोग इस साल बहुत ऊपर भी जाने वाले हैं. तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी नॉट अ नॉर्मल ईयर. This year is going to be quite extreme for most of the people, क्योंकि या तो लोग ऐसे हैं या वैसे हैं. या तो लोग क्विक एक्शंस लेते, क्विक डिसीजंस लेते, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करते. तो जो लोग वो कर रहे हैं वो लोग तो चेंजेस देखेंगे, वो लोग तो अचीव करेंगे, बिकॉज शनि, लाइक आई सेड, इज अ जज. सो जजमेंट में डिले नहीं होता है. तो इफ यू आर डूइंग योर पार्ट, यू आर गोइंग टू सी रिजल्ट्स. दैट इज एज सिंपल एज दैट. So this year can be very prosperous and this year can be very, very painful at the same time. Both options coexist this year. बीच में नहीं होगा कुछ ऐसा, एवरेज नहीं निकलने वाला ये साल. ये साल या तो बहुत ही बढ़िया निकलेगा या बहुत ही खराब निकलेगा. एवरेज नहीं निकलेगा. ये मेरा कोर मैसेज है. अब और ये भी आप पे डिपेंड करेगा, because at the end of the day Shani is only a judge. Shani is not the doer. Shani is not doing anything. Shani is only going to be judging. So decision is all up to you कि ये साल कैसा निकलना चाहिए. All up to you. I'll just stop here just to see if anyone wants to ask anything. Hello. Hi, Yes. Akshay. Hi. As you said, 8 is the year of this 2024, and my number, destiny number, is also 8. And is there any effect for the people who have 8 as their number as? If your destiny number is 8, that means if you are going to align vibrationally, right? If you align vibrationally, you will achieve really good success in your professional life.
So destiny number is about professional life. Okay. Yeah. What it means is professionally, if you want to succeed, generally speaking, any other year, not just this year, Mm-hmm. destiny number 8 means कि आप ना कोई शॉर्टकट वाले प्रोफेशन में तो सक्सेसफुल नहीं होने वाले। Hmm. तो ऐसा नहीं कि शेयर ट्रेडिंग में आपको बहुत यू बिकम वेरी वेरी लाइक सक्सेसफुल कि ऐसा Hmm. तो ये टाइप के प्रोफेशंस में तो आप कोई शॉर्टकट वाले प्रोफेशंस में आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आपने हवाला का बिजनेस कर लिया या कुछ ऐसा कर लिया तो यू बिकम वेरी सक्सेस, Hmm. वो नहीं होने वाला, वो तो किसी भी ईयर में नहीं होगा। Ah. हम्म। Ah. So this year, which it all means कि professionally you will be successful if you are disciplined, if you are organized, if you are structured, and you play a fair game. Okay. So as long as you do that, you will have success in your professional life. Hmm. और इस साल तो because the vibrational state of the year can align with you. तो ये तो आपके पास पूरा 1 साल है अपने प्रोफेशनल करियर को एक अलग ही हाइट पे ले जाने के लिए। Hmm. तो you can get really good, tremendous kind of boost in your professional life if you take early on, if you make good plans, organize yourself, discipline yourself, and do that, then this year can be a life changing year for you going forward. Thank you, sir. Hmm. Anyone else wants to ask anything? So if you have any questions, that will give me a direction as well कि और ऐसे बातें करने के लिए तो मैं तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, but I would actually, this since this is an open discussion, something if you want to know, it helps. नहीं तो ऐसे तो मैं बातें करता रहूंगा, I would not know कि whether this is making sense to anyone or not, तो इसलिए पता नहीं चलेगा। Yes, Moshe. Two things. One is, how do I know my number as per numerology? And second thing is, there are a lot of questions in the message box. I am not looking at the message box, so guys, just talk, please. मेरे को ना, I'm doing it from my mobile, so I don't see. No worries, I It's can better. read it out for you. आप या जिसने भी मैसेज डाले हैं आप पढ़ लो ना, मतलब you whoever is, so if you can just unmute and talk will be easy. मैं Hi, हूँ Akarma, shall I? yes, please Anu, go ahead. Anu here. Actually, this is something personal. Means in my date of birth, 8 number is repeated 3 times. Means 28/8/1983. So when I did the, when I gone through the numerology, it was coming something very different. So what it means under 8 repetition is people are saying some tantra, some attracted to some spirituality, so many things. So, but especially this year is any particular things I need to do. I'm changing my all patterns, behaviors, and discipline. Everything is structuring and organizing. That is okay, but Hmm. what it means 8 repeated 3 times. So when a number repeats, as I said, every number has a certain vibrational effect. When um, when a number is repeating twice, it is it is fine. Like we prefer कि number doesn't repeat. So, but what happens? It's very rare. There are 9 numbers
and in date of birth there are only 4 digits, Yes. maximum 4 digits that can be there. So technically speaking, it's not possible for anyone to have all 9 digits in their date of birth. Yes. Um, so if a number repeats twice, then what it means is that the vibrational intensity of that number is high on you. When it's more than two, then it can be quite high. It can actually be deteriorating. It can be damaging as well, because the intensity is too high if you do not know how to balance that. Hmm. So like I said, 8 represents this. 8 represents फेयरनेस, जजमेंट. सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि दैट टेंडेंसी इज इन यू. So, so people with 8 in them have that tendency in them. So they are disciplined, they are hardworking, they are fair, they are they like uh, justice about things and all that. As this intensity grows, then this can basically can convert you into an extremist as well. So you could be a person who could be running an NGO about something like really जो झंडा लेके खड़े हो जाने वाले लोग रहते हैं ना. तो this the intensity can convert you into that. Do you do any of that? Yeah, you are absolutely right. I'm working in a social development sector, especially the well-being for the waste pickers. I don't run the NGO, but I'm working in that sector. See, that is the thing, that vibrational state matches your the requirement of that sector matches the kind of person you are. But I don't get, Andre, yes, whatever you said, that extreme level of transparency, hardworking, and expecting the same from other people, and too truthful, too. हाँ, It is to not working हाँ, in the current society, and it I will feel not. marginalized. No, it's not about it's not working in this society. वो आपका ना शायद सतयुग में भी नहीं वर्क करता. So Yeah, वो बात वो नहीं है. वो बात कलयुग या सतयुग की नहीं है. बात है कि it's way too intense. 3 times 8 is way too intense for any human being to take it. क्योंकि आपका जो this is where you need to understand and manage these things. क्योंकि डेट ऑफ बर्थ को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना. वो तो yeah, you are born, it's set. This is why one of the reasons why I like numerology, because it's set. It's more predictable that way because it's set. So um, this this intensity is there. So you need to know कि this is there. You cannot do anything about it. It's there. Now you can know this and put some management techniques in place to not have so much high expectations from others and all that, because literally speaking, आप सतयुग में भी पैदा होते ना तो भी you would have been facing difficulty कि आज की सोसाइटी में ऐसे लोग नहीं मिल रहे, वहां पे भी नहीं मिल पाते. but I'm because of all these things, I'm missing so many opportunities. Especially financial freedom is very difficult for me. After 15 years of experience, also, I'm now understanding that I have to manage it very smartly. But always I choose my heart, and somewhere I'm missing so many things in my personal life and professional life. All the materialistic things. हाँ, हाँ. I can understand that it will be there. So as I said कि see, my practice of numerology is based on emotional intelligence and mindfulness. I am not the kind of person जो आपको ये बोलेगा कि ये क्रिस्टल पहन लो, ये काले कुत्ते को काली रोटी खिला दो और ये सब. तो I don't practice those things. So I see these things as something that we can handle via emotional intelligence and mindfulness. Yes. So you know, अब what you are describing is fact. उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो फैक्ट है. और Yeah. उसके इफेक्ट्स भी आपने देख लिए. तो उसके ऊपर तो वो तो अभी इट्स वेल नोन टू यू कि दिस इज द फैक्ट. यू ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कि इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है.
अब इसको अगर चेंज करना है तो हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड माइंडफुलनेस तो लगी. Yes. That is what you need to practice. A level of diplomacy in your communication, a level of emotional intelligence, a level of empathy, a level of mindfulness. ये तो लगेगी. इसके बिना तो लाइफ काफी टफ रहेगी. Yeah. नो So डाउट. reality is a reality, fact is a fact. I have to accept the realities and yeah, I got it. Thank you. Thank you so much. And I would say don't even go down this track of I have to accept, क्योंकि there is nothing to accept or reject. आप you are born. ये हो चुका है event. Hmm. So there is absolutely nothing to accept or reject here. It is what it is. Yeah. So don't even remind yourself कि I have to accept this. Because acceptance and rejection kind of gives a suggestion that as if you have a choice कि आप reject भी कर सकते हो. आप reject क्या करोगे? जब choice ही नहीं है तो फिर acceptance की बात भी कहां से आती है? Yeah. Can you reject this? No. If you cannot reject this, जब जब coin में head और tail है ही नहीं तो you say कि I am okay with heads. है ही heads. तो what is there to be okay with it or not okay with it? Tails तो है ही नहीं. Yes. So Good. so don't even go down that track of acceptance and rejection and all that. Just understand कि this is what it is and put more focus on the management of this thing. Hmm. So लाइफ में दो चीजें होती है ना. एज वी हैव टॉक्ड अबाउट इन आवर हीलिंग जर्नीज, वी टॉक अबाउट that when we are going through some emotional wounds and pains, we talk about ki let's cure them. Why do we have to manage it? हमें कोई प्रॉब्लम को पालना क्यों है? हम उसका क्योर कर सकते हैं, लेकिन क्योर उस चीज का कर सकते हैं जिसका क्योर किया जा सकता है. अ, ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई क्योर ही नहीं है. ये कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं. दिस इज हाउ इट इज. So now it is all about ki you have to learn to live with this. You have to just know this about you, and now you have to adopt practices and adopt a way of being aligned with this. Hmm. So just get aligned with this. Sure. Thank you. There's nothing to fight here. You cannot fight. There's nothing to fight. Hmm. Cool. Thanks, Anu. Yeah. Thank you. No problems. Thank you. Anybody else wants to ask anything? Yeah, actually, my first question. What was it? Can you ask again? मैं भूल गया. Sure. Like, how do I determine my number? What is my number in the numerology too? Uh, Uh, so see, core number is derived by adding your date of just the date, the day part of your birth date. So that is your core number, which is the which will tell you ki what kind of alignment you need to be in order to be successful in your personal life. okay, so my date of And birth is then 3rd July 81. So 3 is the core number. 3 is your core number. Oh, So then you take all the digits, third 03071981, इसको पूरे को और सारों को ऐड करोगे तो वो जो नंबर आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर रहेगा. That number tells you what you need in alignment with in order to be successful professionally. ठीक है. um, Neelam, your hand is up. You want to ask?
Yeah, hi Akarma. This is Neela. My Yeah. the score number is 2. I'm born on 20th of August. So my month is also 8 and the total then destiny also becomes 8. So it is 288. So I would like to know what would be my personal life like and what should be the precautions or how should I go about it and how will be the Uh, uh, professional one as per your नहीं नहीं mindfulness just and whatever you feel to हाँ share. just uh, हाँ so see these things are not done like this ऐसे ऐसे नहीं होता है ये Mm-hmm. ऐसे I will not be preparing anyone's chart here कि Okay. अभी मेरा ये date of birth है तो मेरे लिए ऐसे this work is not done like this ऐसे नहीं होता अच्छा. है Okay. आपको कोई particular question है तो वो पूछो Last year was what I have heard about 2023 is it was a spiritual year because उनका total 7 आ रहा था. So what has happened with me? I have become very calm down the way I used to be. I used to be very energetic and very hardcore, hard worker. Whereas in last year, this has gone very down. I've become very calm, and I feel my activity or the speed of the activity and decision has been reduced. So how do I deal with it? As this year is all about karma, and this year is all about doing things. So my speed has gone down. So I don't know how to deal with it. Be it any decision making, any activity. Whereas I used to be a very active person earlier. मेरे को समझ नहीं आया सो यू आर सेइंग कि सो व्हाई हैव यू बिकम इनएक्टिव आई डिडंट अंडरस्टैंड लास्ट ईयर you became inactive why you became inactive Uh, Not inactive as such, but I took a break from my professional life as I worked a lot. So physically and mentally, I was exhausted. So I thought of it. It happened naturally, and when I started learning numerology, I found out 2023 was all about spiritual learnings and uh, inner learnings, going inward. So in that zone, maybe this is what I'm assuming. So in that zone, I have lost the speed or the uh, movement, whatever I mean, mental, physically, I became Recording in progress. very slow, I can say. okay anu can you please just mute yourself so just everybody keep yourself on mute and then we will whoever wants to talk then they Yeah, sure. can okay so नीलम मेरे को अभी भी क्लियर तो नहीं हो रहा है कि आप क्या बोल रहे हो लेकिन लेट मी रिपीट व्हाट आई अंडरस्टूड सो जस्ट सो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग सो यू आर सेइंग स्पिरिचुअल लर्निंग लर्निंग जो मैं सुन रहा हूँ जो व्हाट यू आर सेइंग मे बी यू मीन समथिंग एल्स आई मीन मैं एक बार डेफिनेशन एक्सचेंज कर लेता हूँ कि मेरे को सही समझ में आ रहा है या नहीं जो मैं लर्निंग यूज करता हूँ मेरी डेफिनेशन लर्निंग की क्या है कि लर्निंग हैपेंस इन 3 लेवल्स तो पहले तो हम कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं किसी से तो एक वो लेवल की लर्निंग है जब मैंने वो एक कॉन्सेप्ट सीखा वो तो समझ की बात है वो लर्निंग नहीं है वो तो टेकिंग टेकिंग द नॉलेज हो गया फिर मैं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ और वो अप्लाई करने के बाद मुझे जो एक्सपीरियंस होता है उससे मुझे एक लर्निंग होती है तो दैट इज माई लर्निंग तो मैं जब लर्निंग वर्ड सुनता हूँ तो दैट इज व्हाट आई फील is this what you also mean by learning is this what happened to you last year or your last year was more about acquiring knowledge No, it was also about practicing. तो प्रैक्टिसिंग में स्लो कैसे हो गया फिर प्रैक्टिसिंग Um, कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो तो स्लो कैसे हो गया I don't know. नॉलेज एक्वायर कर रहे होगे तो मैं समझ सकता हूँ स्लो हो सकता है कि ऑल वी आर डूइंग इज जस्ट गोइंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं इसकी बात भी सुन रहे हैं उसकी बात बस बैठ के सुन रहे हैं बुक्स पढ़ रहे हैं ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं उसमें कोई स्लो हो रहा है तो वो मैं समझ सकता हूँ बिकॉज इट इज इनएक्टिविटी तो Mhm. आप सिर्फ बेसिकली जस्ट खाए जा रहे हो इट्स लाइक कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा बस मैं खाए जा रहा हूँ खाए जा रहा हूँ खाए जा रहा हूँ और मैं ऐसा
डेंस होके बैठ गया हूं, तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बस मैं भरे जा रहा हूँ अपना पेट, तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हुआ, और आई एम टू डेंस टू मूव, then there is a level of lethargy that comes, there is a level of inactivity that comes, then I can understand कि ऐसा हुआ. लेकिन इफ यू आर सेइंग कि मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी, आई वाज अप्लाइंग दिस एंड आई वाज लर्निंग, तो फिर मेरे को कंप्यूट नहीं हो रहा कि फिर स्लो कैसे हो. मे बी मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे हैं खुद से कि आई शुड हैव अचीव दिस एंड आई कुडंट, एंड मे बी मुझे उसकी वजह से लग रहा है कि मैं स्लो पड़ गई. ओके, सो कुछ गोल्स रखे थे जो अचीव नहीं हुए, एंड जी दैट इज व्हाट जी यू आर सेइंग. जी जी. ओके, ओके, तो कंटिन्यू विद दोस गोल्स दिस ईयर. या दैट्स व्हाट. So, um, so you maybe you overestimated something. आपको लगा कि ये इतने टाइम में कंप्लीट होगा, बट वो उतने टाइम में नहीं हुआ. So ट्रू maybe your calculation was not correct about it. ट्रू टाइम कैलकुलेशन या जो भी कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन गलत की. ट्रू. मैंने तो साल भर में कुछ ज्यादा प्लानिंग करके रखी थी, और आई कुड अचीव फेयरली जो भी मैंने अचीव किया, बट या मे बी आई एम फोकसिंग व्हाट एवर आई कुडंट अचीव, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं स्लो पड़ गई. राइट, राइट, ठीक है, ठीक है. तो फिर वो तो खैर, ये तो एक टेंडेंसी है. ये तो it's got nothing to do with the year 2023 or 2024. It is a tendency that one person sees the glass half full, one person sees the glass half empty. तो ये तो टेंडेंसी की बात कर रहा हूँ. तो चाहे ग्लास 80% भी भरा हो, लेकिन इट्स लाइक ये 20% खाली क्यों है, तो उसमें तो ईयर का कोई लेना देना नहीं है. ओके. Hmm. कैन Akarma, आई I आस्क. have a question. Just Like, one minute. Someone is talking. Let them complete that. oh, Then we, okay, yeah, sorry. please raise your hand and I'll come to you. Yeah, yeah, Okay, okay. yeah. Yeah, Sorry. Continue, Neelam. so maybe I know a few of the places where I don't feel complete. So I feel that I'm not consistent. My that core number is 2, so it is with respect to moon. So I know that I get a lot of mood swings. I'm a creative person. So most of the time, whatever I plan, I stop because I procrastinate, and also sometimes I feel this idea will work, will not work, and then I drag, and so back and forth hota rehta. So maybe consistency is missing is what I can. I mean, you correct me if I'm हाँ, wrong. Wrong. नहीं, पॉसिबल है. नहीं, आई इट कुड बी. मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन करेक्ट यू और नॉट, बट यू नो योर सेल्फ बेटर देन मी. तो आप जो बोल रहे हो, आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद दैट, कि इफ दैट इज व्हाट यू हैव पिक्ड, देन दैट वुड बी ट्रू. तो अब क्या है कि इस साल तो ये चलेगा तो नहीं. So, so it may be true about you. So I let's go with that. Let's go with कि ये true है आपके लिए. Yeah. The thing is कि ये इस साल ये चलेगा नहीं, लेकिन इस साल you would have to adopt different habits, different way Yeah. of doing things. You have to learn time management. You have to learn good decision making. You have to learn how to take action on things, not procrastinate or all that. वो करना तो पड़ेगा. इस साल अगर कहीं पहुंचना है, और वो इस साल ये साल पेनफुल ना रहे, तो उसके लिए ये तो करना ही पड़ेगा. Yeah. तो अब ये मैटर ही नहीं करता है कि दिस इज हाउ यू आर एंड ऑल दैट, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है. राइट. या जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि जो करेंगे वो तरेंगे, मतलब वही आगे जाएंगे, नहीं तो एक वो इट ही इज गोइंग आगे टू बी जाएंगे. हाँ, दिस एक्सट्रीम में जाने वेरी वाला है दिस. पेनफुल, हाँ, इट इज वेरी गोइंग टू बी एट द पेनफुल ईयर. एक्सट्रीम. हाँ, हाँ, सो आई हाँ, आई वांट टू गो एट द अपर साइड ऑफ इट, सो आई विल डेफिनेटली टेक हाँ, एफर्ट्स. या या हाँ. सो यस. यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज राइट. थिंग्स. अगर सिर्फ यही अपने आप को बताते रहोगे कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन एंड आई डोंट, सो क्रिएटिविटी डजंट मीन lack of structure. या Creativity is not like creativity is not fluidity.
आपने आपने कौन सी ऐसी चीज देखी है नेचर में जो क्रिएटिव है और उसमें स्ट्रक्चर नहीं है? राइट। कौन सी चीज बस पानी पे ही बनी हुई है या हवा में ही बनी हुई है? लाइक विच थिंग डजंट हैव स्ट्रक्चर? सो सो क्रिएटिविटी कैनॉट बी इक्वेटेड टू लैक ऑफ स्ट्रक्चर. वो तो Yes. सीखना ही पड़ेगा, वो तो Yes. सीखना ही I'll पड़ेगा. develop the structure this year to follow and to execute. Yeah. Got it. Cool, thanks. Yeah. Thank you. No problem. Shubham, yes, you can go ahead now. Thanks, Akarma. I just got to know in this session that there are two things: the core number and destiny number. Probably core number defines our personality, and destiny number defines that what we need to be aligned with. So my question is like, if my core number arises from my date of birth, like if it is 11, uh, so so my core number comes 2, but there is 1 2 times. So what will be more impactful on me? The vibration of number 1, which is 2 times, or the vibration of number 2 itself? Both. It's Okay. not that. It's not. No, you didn't hear me correctly. I didn't say that. What I said is, in order to become successful in your personal life, you have to be like a moon. 2 is moon, 1 is sun. So, sun and moon are two opposite things. Okay. So you cannot be like existing like two suns and expect कि आपकी पर्सनल लाइफ में सब बढ़िया हो जाएगा. पर्सनल लाइफ में you have to align with the energy of moon um, to succeed. Okay. So, but the impact on me will be very high of sun, because number 1 is 2 times. And I will need to be Yes. aligned with the moon's path. Yeah, you have to become like a moon. So yeah, so maybe so basically आपको अगर ऐसा खुला छोड़ दिया जाए तो you will be like a very hot sun. But a very hot sun, being a very hot sun, you will not be able to succeed in your personal life. Mm-hmm. Okay. So you have to become a cold moon, a more emotional moon. You have to read more about the vibrational energy of 2, what it means, and what it means is, it's not about कि इसका impact है उसका impact. That is not what I'm saying. I'm saying कि in order to achieve success in your personal life, whether it is your relationships or relationship with you yourself, you have to operate from lot of empathy, lot of emotional intelligence, emotional availability, emotional balance, all these things. Okay. Okay. And I will So need if you to if you practice that, then you will have better relationships with yourself and with others. okay. And how the balance with sun works, like, because impact of sun is also on it. So how is it balanced, the moon and sun? How to balance it? There is nothing to balance. There is nothing for you to balance there. Why you are मतलब Okay. आप My ऐसे सुन क्यों रहे हो इसको बैलेंस के like एंगल my से? देर आर like डिफरेंट नंबर्स. mm, नहीं, एक मिनट. Different numbers in your date of birth have different energies. So इसको ऐसे मान के चलो, इसको simple for everybody. I'm explaining this. So in case if anyone wants to have some similar kind of question, so I'm answering this. हर नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो लेट्स से कि आपको आप छोटे हो, आपको सिंगर बनना है, आपको सिंगिंग का बहुत, आपको सिंगर बनना है, ठीक है. लेकिन आपको
भगवान ने उतना अच्छी आवाज या उतना वैसा नहीं दिया है। तो अब आपको क्या करना, अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस सिंगिंग। मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत राइट, करनी पड़ेगी, करेक्ट। बिल्कुल। और अगर आपको भगवान ने अच्छी आवाज दी होती तो क्या करना होता? तब भी प्रैक्टिस करना होता। कम प्रैक्टिस करनी होती, कम, हाँ बिल्कुल। मेहनत तो कम लगती ना। देर इज अ लेवल ऑफ गॉड गिफ्ट दैट इज देयर, राइट, राइट। तो राइट। एक नेचुरल गिफ्ट है वर्सेस कि वो कभी था ही नहीं जिसको डेवलप करना पड़ रहा है। तो ये जो हम्म, नंबर्स होते हैं ये सब ऐसे ही होते हैं कि जब आपके चार्ट में वो नंबर है तो इसका मतलब उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको नेचुरली अवेलेबल है। इसमें ओके। ऐसा नहीं इसको कैसे बैलेंस करना है या उसको कैसे बैलेंस करना है, देर इज नथिंग लाइक दैट। हम्म, आपके पास वन नंबर है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है, ये है वो है। इसका मतलब कि हर नंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। लाइक वन इज सन, सन रिप्रेजेंट्स थिंग, गुड डिसीजन मेकर्स, लीडरशिप qualities, all those things. So one represents that, two represents emotions and emotional availability, emotional sensitivity and those kind of things. ऐसे ही हर नंबर की एक क्वालिटी है। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दोज डिटेल्स इन दिस कॉल। सो हर नंबर की एक क्वालिटी है। इसका मतलब है जब वो हमारे चार्ट में अवेलेबल होते हैं तो दे आर नेचुरली अवेलेबल टू अस, और जब वो हमारे चार्ट में नहीं है तो हमको फिर कुछ करना पड़ता है उस स्किल को डेवलप करने के लिए। तो लेट्स से फाइव, नंबर फाइव इज अ गुड कम्युनिकेटर। दैट पर्सन इज अ नेचुरली गुड कम्युनिकेटर, जिनके चार्ट में पांच नंबर कहीं ना कहीं आता है। तो अगर वो है तो वो ऑलरेडी बड़ी अच्छी तरह से अपनी चीजों को समझा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और पर आप कोई ऐसे प्रोफेशन में आ गए हो जहां पे आपको कम्युनिकेशन अच्छा करना है बट आपके पास पांच नंबर नहीं है, तो सीखना पड़ेगा ना। राइट। तो इट्स नॉट नथिंग लाइक कि इसको एक को और दो को कैसे बैलेंस करना है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ये अलग अलग क्वालिटीज हैं। आपको ये जानना है कि मेरे में नेचुरल क्वालिटीज क्या है और मुझे अडॉप्ट क्या करना है। तो अगर जैसे नंबर्स के पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे पास आते हैं, वैसे ही उनके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है वो भी हमारे पास आते हैं। तो क्या क्या ये सही है जैसे आपने जो नंबर्स के बताया? और वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, नंबर के नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं होते हैं। नंबर्स ज्यादा हो जाते हैं जब तो उनका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। ऐसे है कि आपने, जब आप सब्जी में एक चुटकी नमक डालते हो तो खाना का टेस्ट अच्छा आता है, दो चम्मच डाल दोगे तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाएगा। ओके, राइट, राइट। तो इट्स नॉट कि नंबर के नेगेटिव, नंबर्स के कोई पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे नहीं है। इट इज लाइक कि ये नंबर की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब किसी के डेट ऑफ बर्थ में वन ही चार बार आ रहा है अगर, तो ओके। तो उस केस में इंटेंसिटी बहुत हाई है। तो देर इज अ वेरी गुड टेंडेंसी कि वो इंसान अ, एक ही तरह से सोचे। वो बहुत उस इंसान के रिजिड हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लाइक सुपर हाई। राइट, राइट। क्योंकि उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गई है, वो नमक ज्यादा हो गया है। ओके। तो इट्स लाइक दैट। तो उसको मैनेज करना पड़ता है। लाइक वी वर टॉकिंग टू अनु बिफोर, शी वाज टॉकिंग अबाउट नंबर 8, कि जब वो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो उससे खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। उसको मैनेज करने की जरूरत होती है फिर, क्योंकि नंबर्स को तो अब खाना में तो नमक पड़ गया, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। ये नंबर्स तो अब आ गए, आपका तो ये डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स्ड है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हो। नंबर्स को घटा बढ़ा तो नहीं सकते हो। तो ये सब जान के आप कोई मैनेजमेंट टेक्निक तो लगा सकते हो ना। अब अपने बारे में ये तो मालूम पड़ गया कि ये मेरी टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, अब इसका कुछ करना पड़ेगा। राइट, राइट, राइट। तो बैलेंस जो करने की बात हो रही है, बैलेंस करने की बात उस चीज को बैलेंस, ये नहीं बैलेंस करने की बात है कि एक या दो को कैसे बैलेंस करूं या तीन या चार को कैसे बैलेंस करूं, नहीं। ये हो रही है राइट। कि अगर तीन, अगर अगर वन रिपीट हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर नंबर फोर रिपीट हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। हम इंडिविजुअली नंबर्स को देख रहे हैं, हम एक दूसरे से कंपेयर करके नहीं बैलेंस कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और अगर आप जो बता रहे हैं, आप बहुत साइंटिफिक टर्म्स में उन चीजों को समझ के और हमारी हैबिट्स में अप्लाई करने के लिए बता रहे हैं। पर अब जैसे आपने एक चीज बताई, वो थोड़ी सी अलाइन हुई, जो मेरी मॉम मुझे कहती है, लाइक वन कोरिलेट्स टू सन। माय मॉम सेज टू मी दैट तुम्हारे ऊपर सूर्य का प्रभाव बहुत है, तो तुम जो नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए आप जल चढ़ाओ।
आप सूर्य को। तो क्या ये चीज भी काम करती है न्यूमरोलॉजी में? आई डोंट प्रैक्टिस दोज थिंग्स, तो आई डोंट गो इन दोज थिंग्स, नो। मतलब मैं ओ, वो अलग ही बातें हैं, वो अलग ही बातें हैं, वो एक्सटर्नल बातों के ऊपर। मैंने जैसे पहले ही बोला था कि आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स, कि अपने में कोई चेंज नहीं लाओ, बस बाहर से ये क्रिस्टल पहन लो, हम्म, ये राइट। ये कर लो, ये आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स। आई ओके। बिलीव कि दिस these are vibrational effects on us, and we need to take care of it. So जल ही चढ़ाना है तो अपने ऊपर अंदर से जल चढ़ाओ। ओके, राइट। Hmm. थैंक्स अकर्मा। Yeah, no problems. Let's see others. Who is whose hand is up? Sony, your hand is up. You want to say something? Yeah, Karma. Hello. My question is, hello? Yeah, Yeah, I can uh, hear you. yeah. My question is, if you and your partner's destiny number matches, then how does it affect your relationship? For example, it is 9. So both of these partners are having 9 number as the destiny number. It doesn't. It can affect if you both are not professionally aligned. अगर आप प्रोफेशनली अलाइंड हो, तो फिर अ, अगर 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 आप दोनों अलग अलग प्रोफेशन में हो तो क्या मैटर करता है? सो डजंट मैटर। you go and work somewhere, that person goes and works somewhere, it doesn't matter. If you both are working together, then 9 is the number of Mars, passion. अगर आपकी Mm. पैशन अलग अलग डायरेक्शन में है और काम मिलके कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। Okay. Okay. I had one more question. Is this related to twin flame thing कि अगर ये destiny number match कर रहा है तो like you are twin flame of each other? There is no correlation in that No? as such. Okay. No, Okay. Got it. Thank you. no problems. Sonam, you want to ask? Yeah, hello. Uh, Actually, I wanted Yes. you to repeat the number, like सारे numbers की जो frequency है ना, वो मतलब मतलब कौन सा नंबर किस planet को represent करता है, वो actually मैंने थोड़ा बीच में 4 5 6 7 का मुझे सुना ही नहीं दिया, मिस हो गया because of my network issues। और वो उसका vibrational quality क्या है, वो आप जो समझा रहे थे, अगर आप ये बता दो कि नहीं, कहाँ से मैं वो, देखना, आप ये बता दो कि हाँ, कहाँ से वो चेक कर सकते हैं, वो मैं देख लूंगी। वो तो खैर YouTube पे बहुत कुछ अवेलेबल है। ऐसे मेरे को ऐसे तो याद नहीं है कि कहाँ से देखना होगा, बट इफ यू जस्ट गूगल कि व्हाट ईच नंबर मींस एंड देयर क्वालिटीज, तो गूगल पे बहुत मटेरियल अवेलेबल है। ओके, तो तो आज, हाँ, लाइक could you please repeat like 4 नंबर किनको रिप्रेजेंट करता है? 4 है राहु का नंबर, और 5 है मर्क्यूरी का नंबर, 6 है वीनस, 7 है केतु। ओके, थैंक यू, ये चारों हाँ, मिस हो गए थे। ओके, आई हाँ, चेक, मैं यूट्यूब पे देख लूंगी। थैंक यू। हाँ, हाँ। जस्ट जस्ट फॉर नॉलेज फॉर एवरीवन, लाइक मैंने बोला कि मेरे को ये ऐसे क्लास या लेक्चर नहीं करना है इसके बारे में अभी, लेकिन जस्ट वन वन वर्ड इफ आई गिव, तो 1 इज सन, विच इज लीडरशिप क्वालिटीज। 2 इज मून, मून विच इज इमोशनल क्वालिटीज। अब जैसे आप कर सकते हो कि अगर अगर वो लीडरशिप क्वालिटी एक, अगर वो नंबर एक या दो, नंबर एक जो है वो एक या दो बार है तो ठीक है, वो चेक में है। लेकिन जैसे ही नंबर 1 रिपीट होने लग रहा है, तो दैट पर्सन ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक अ डिक्टेटर। तो वो बहुत रिजिड हो जाता है वो इंसान। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज जो है वो ऑलमोस्ट लाइक अ टायरेंट, लाइक अ डिक्टेटर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2 है
इमोशनल सेंसिटिविटी का नंबर अगर एक या दो बार आता है चार्ट में तो अच्छा है, दो बार से ज्यादा आने लग रहा है तो वो बंदा ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ओवर इमोशनल हो जाता है, तो वो टॉक्सिक होने लगता है वो टेंडेंसी। तो दैट इज व्हाट इट इज। 3 इज जुपिटर विच इज अबाउट नॉलेज। तो वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो वो इंसान बस नॉलेज एक्यूमुलेट करने में द पर्सन बिकम्स इम्प्रैक्टिकल। तो दैट इज देयर द टेंडेंसी। अब नॉलेज एक्वायरिंग तो अच्छी बात ही है, वो तो हमको करनी ही चाहिए। वी नीड टू लर्न, वी नीड टू ग्रो। एंड पीपल हु हैव 3 इन देयर चार्ट, व्हाट इट मीन्स इज कि नेचुरली दे आर इंक्लाइंड टूवर्ड्स लर्निंग एंड ग्रोइंग। तो ये नेचुरल टेंडेंसी है। पीपल हु हैव 2 इन देयर चार्ट वो नेचुरली सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो वो अच्छे कनेक्ट हो सकते हैं लोगों से। दे कैन बी एम्पथेटिक, दे कैन बी सेंसिटिव, कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर्स। ज्यादा होने लगता है तो दे कैन बिकम ओवर सेंसिटिव, ओवर कंसिडरेट, तो वो प्रॉब्लम है। एंड 4 इज राहु। राहु इज अबाउट प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी का नंबर है। राहु के दो वर्जन्स है, एक प्रैक्टिकलिटी, दूसरा डिल्यूजन। सो ज्यादा बार अब वो इंसान जो है 4 नंबर का इफेक्ट डिल्यूजन से भी होने लगता है। 4 नंबर ज्यादा हो गया अगर आपके चार्ट में तो द पर्सन कैन बिकम वेरी डिल्यूजनल, और वो अपने डिल्यूजन्स को बहुत ज्यादा सही भी मान सकता है। अब यहाँ पे मैं चार्ट के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें सारे नंबर के कॉम्बिनेशन में देखना होता है। अब किसी के तो चार्ट में 4 नंबर भी दो दो बार रिपीट हो रहा है मान लो, और एक नंबर भी 2-3 बार रिपीट हो रहा है, तो वो पर्सन ना सिर्फ एक डिक्टेटर टायरेंट टाइप लीडर है बट डिल्यूजनल भी है। तो things have to be the charts have to be prepared with lot of consideration। तो ये ऐसी चीज नहीं है कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है तो ये क्या होगा, ऐसे नहीं होता है वो। तो और ऐसे मैं एडवाइस देता भी नहीं किसी को। तो these things to be looked in lot of from lot of angles। 5 जो नंबर है जुपिटर का विच इज अबाउट कम्युनिकेशन। सो 5 नंबर अगर आता है तो पर्सन हैज नेचुरली गुड कम्युनिकेशन क्वालिटीज। तो नेचुरली गुड कम्युनिकेटर्स, दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स बेटर इजीली एट ऑल। 6 नंबर है तो दैट इज अबाउट कनेक्शंस। सो 6 जिनके भी चार्ट में आता है, दोज आर द पीपल हु आर socially inclined। They also like luxury। 6 नंबर जो है वो शुक्र का है, जो कि अम, दैत्यों के गुरु थे। तो वो भी गुरु हैं लेकिन दैत्यों के गुरु, दूसरी साइड। 3 नंबर जो है वो गुरु का है, और 6 नंबर है दैत्यों का गुरु। कोई वैसे 36 का आंकड़ा, उस तरह से आपने जो टर्म सुने होंगे कि 36 का आंकड़ा है इन दोनों का। तो दो दो गुरु हैं लेकिन दोनों अलग अलग टीम के गुरु हैं। एक देवों के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, और हैं दोनों ही गुरु। तो तो जो लेवल है वो तो गुरु का ही लेवल है, लेकिन गुरु किस इंटेंशन से आ रहा है वो अलग हो जाता है। वो सब चीजें कंसीडर करें। 7 इज द नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो इफ 7 number is there in your chart somewhere, then the person is naturally inclined towards spirituality। 8 नंबर शनि का है, which is about being fair, a judge। So this person is a judge। अब समझो कि 8 नंबर और 1 नंबर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, या 8 का 1 का और 4 का कॉम्बिनेशन हो जाता है, तो द पर्सन कैन बी वेरी delusional judge who is also imposing their decision। बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन इसलिए देखना पड़ता है। 9 इज मार्स विच इज पैशन। सो पैशन है, एक या दो बार वो 9 रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है। ज्यादा बार होने लगता है तो पर्सन बिकम्स डिल्यूजनल विद देयर पैशन ऑल्सो। तो उनको अपने पैशन के अलावा फिर कुछ दिखता ही नहीं है, तो दे कैन बिकम वेरी इम्प्रैक्टिकल, दे कैन बिकम वेरी डिल्यूजनल ऑल्सो। सो
this is like a very like a one word summary of all this that is there, but इसमें बहुत सारे combinations and all those things are there which needs to be looked into. But आज का intention तो सिर्फ 2024 को डिस्कस करने का था. हाँ. Anybody else wants to ask anything? Uh, Akarma, sorry, I cannot raise hand because I don't have that updated version of the app. Can I continue? Yes, yes. Okay. I have just one last question. I was reading something on internet about this numerology, and I came to know one thing that like after year 2000, the impact of number one is very less on humanity. Before year 2000, the impact of number one was very high. The number one is a starter's number. The people who initiate something, it was like Henry Ford or anybody else, that kind of person. Ford had number one. So how, like, you're an expert, so is it really a correct thing that after 2000 impact of number one is I less? think it's just I think it's just an over analysis of things. I think it's just an over analysis of things. ऐसा कुछ है नहीं. I think some people just read way too much into these things. So Okay, okay, बहुत ज्यादा लॉजिक से आते हैं कि 2000 से पहले तो सारे इयर्स ही 19 समथिंग से स्टार्ट हो रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट एवरीवन हैड वन. तो अभी 2000 से बाय डिफॉल्ट एवरीवन हैज टू कमिंग इन देयर. बट मंथ्स में भी तो वन आता है, डेज में भी तो वन आता है. right, right. 2010 में भी वन था, 2011 में भी वन था, 2021 में भी वन था. सो I think just reading too much into these things Okay. and making like a generalized statement like that is, yeah, Mhm. I don't Okay, okay. Thanks. mm, no problem. Sony, your hand is up. You want to ask something? या एक्चुअली ये जो नंबर देखते हैं तो वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखना होता है या कोड नंबर और डेस्टिनी नंबर को भी काउंट करते हैं? नहीं, कोर नंबर और डेस्टिनी नंबर तो डेट ऑफ बर्थ से ही आते हैं ना. हाँ नहीं बट लेकिन कोड लाइक अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ इज लाइक 20 March 1991 तो मेरा कोड नंबर विल बी 2 बट द इंटायर नंबर लाइक डेस्टिनी नंबर विल चेंज. तो उसमें इतना वो तो अच्छा. नेसेसरी नहीं है कि 2 रहेगा या नहीं रहेगा. मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन. टू रहेगा या नहीं रहेगा, मैं समझा नहीं. सो योर कोर नंबर इज लाइक 2 and your destiny number is also 2. That's what you're saying. no like my code number will be 2 but suppose my 20 meaning 26 suppose my date of birth is like 26 March or 1991 so like here हाँ. the code number is 8 but इस हाँ. पूरे date of birth में तो 8 है ही नहीं. हाँ. So हाँ तो ये like which number मतलब 8 का कुछ like इफेक्ट होगा या फिर जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर थे सिर्फ उनके इफेक्ट होंगे? नहीं, 8 का भी इफेक्ट होगा, थोड़ा होगा. बट 8 का इफेक्ट जो होता है वो ऐसे हम हाफ मान के चलते हैं. सो ओके ये जो नंबर्स, जो कैलकुलेटेड नंबर्स होते हैं, इनके इफेक्ट को हम हाफ मान के चलते हैं. तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पे 8 आ रहा होता और कोर भी 8 होता, तो हम उसकी इंटेंसिटी को 1.5 मान के चलते. ओके ओके so like my like destiny number is 4 which comes to be like Rahu. तो उसमें आपने बोला कि like it is practical and delusional तो like how how should I work like should I be more practical? आप ये मतलब ये रेजोनेट करना चाह रहे थे मतलब मुझे समझ नहीं आई ये. आई थिंक मतलब ये तो कंक्लूड नहीं करेंगे कि यू शुड बी मोर डिल्यूशनल. तो या सो यू व्हाट वी आर सेइंग कि पर्सनल सॉरी प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने होंगे या प्रैक्टिकली देखना होगा चीजों को. तो प्रैक्टिकल सो
what do you understand when I say practical? आपको क्या समझ में आ रहा है? So what does practical means? क्या होना पड़ेगा? Like for me, what I'm able to understand कि whether like कभी कभी होता है कि इट इज वेरी एक्सट्रीमली मतलब जो सही चीजें होती है बट इट इज नॉट लाइक प्रैक्टिकली करेक्ट इट आई मीन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ओवर द टॉप होकर वो करनी मतलब दैट इज जो सही चीज है जो करनी चाहिए बट मे बी वो प्रैक्टिकल सेंस में वो सही नहीं बैठ रहा. Hmm. So basically, sometimes we have logics, sometimes we have opinions, and the other thing is practicality. They are all three different things. कई बार कोई चीज लॉजिकली हमको बड़ी सही लगती है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होती है. सुनने में बात करने में तो बड़ी सही लग रही है, प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन. और कई बार होता है कि हम सिर्फ अपनी ओपिनियन से ऑपरेट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि कुछ ईगो बीच में आ गई है, किसी ने तो कुछ ऐसा उंगली कर दिया कि अभी तो ऐसे ही करेंगे, तो वो आ जाता है, तो वो भी प्रैक्टिकल नहीं होता है. सो प्रैक्टिकल इज कि काम होना चाहिए, डजेंट मैटर कि वो आइडिया किसका था. अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये जो चीज है, ये जो सजेशन है, ये जो आइडिया है ये सही है, तो not mixing logic, not mixing your own opinion and all that into it, and not mixing कि ये कोई और बोल रहा है तो इसीलिए नहीं करना है, ऐसे नहीं है. सो इट सीइंग द प्रैक्टिकलिटी साइड ऑफ थिंग्स which may not sound logical, or sometimes practical things can sound very counterintuitive also. इंट्यूटिवली आप सोचोगे तो आपको लगेगा ऐसे करना चाहिए, बट एक्चुअली में दुनिया में ऐसे होता है. राइट. तो वो देखना कि ये है, ना कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, लोगों को. बिल्कुल सही बात है, बट बदल तो नहीं रहे हैं ना, अभी तो नहीं हो रहा है ना, अभी तो ये करना है ना. तो वो जो चीजों में हम अटक जाते हैं ना, जिसमें हम वो प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखाते हैं, हम आइडियोलॉजी में फंस जाते हैं, फिलोसफीज में फंस जाते हैं, लॉजिक्स में फंस जाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को ऐसे बात नहीं करनी, इनको ये नहीं करना चाहिए, तो ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए, बढ़िया बात है, पर कर रहे हैं. So it is only related to professional field, not in like personal field, right? That's what you said, no? Your destiny number is 4. That's what you said. I don't know. Yeah, I'm yeah, just destiny only number is 4. taking your Yes. conversation forward. No, yeah, yeah. I mean to say like destiny number is only affecting your professional life. Yeah, destiny number is to do with your professional life. Yeah. So अगर प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहिए तो 4 नंबर की वाइब्रेशन के साथ काम करना पड़ेगा, उसके साथ अलाइन होना पड़ेगा. Okay, fine. Because taking these steps is like really difficult in like my personal life. So it is very difficult to like only be running on like practical things and not going by philosophy. So okay, if it is only related to professional life, then it is like fine. Otherwise, it would have been like very difficult. हम्म, Thank you. हम्म, ठीक है, नो प्रॉब्लम. ऑल राइट, ग्रेट. और कुछ किसी को 2024 से रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन रैप अप द कॉल आल्सो. आई थिंक इफ वी आर डन, so we can wrap up the call. No more questions. Yes, Neela.
2024 से इतना रिलेट नहीं करेगा ये क्वेश्चन, बट आई हैव दिस क्वेश्चन अलॉन्ग, मतलब पहले की डिस्कशन से ही है। तो कोर नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये दो चीजें हमने समझी, उसके वाइब्रेशन समझे। मेरा सवाल ये है कि जिनके भी बर्थ डेट में टोटल अगर हम देखें, डे, मंथ और वो 4 डिजिट का जो भी साल हम कहते हैं, तो ये सारे नंबर्स का भी असर या फिर सारे नंबर्स के भी वाइब्रेशंस हम पर काम करते हैं, या सिर्फ कोर और डेस्टिनी? और अगर सारे करते हैं नहीं तो नहीं, वो अगर सबके करते रिपीट हैं। होते, सबके करते हैं? अच्छा, हाँ, ओके। सब और करते अगर हैं। रिपीटिंग है तो आपने जो एक्सप्लेन किया उसको समझना है, और जितने भी नंबर्स हैं वो सारे अफेक्ट करते हैं एज पर दी वाइब्रेशनल देयर कैरेक्टर्स। ओके। करेक्ट करेक्ट, अफेक्ट करते हैं इन द सेंस कि what I would like you all to take the final message from this conversation कि not to see this as कि ये affect करता है या नहीं करता है, क्योंकि वो एक अलग ही टाइप का टेक अवे रहेगा। तो आई डोंट नो कि मैंने इस कॉन्वर्सेशन में वो लैंग्वेज यूज की है कहीं पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आई प्रमोट मैसेजेस लाइक दैट। तो अगर किया है तो आई एम जस्ट गोइंग टू करेक्ट इट कि इट इज नॉट टू बी सीन एज कि अफेक्ट करता है या नहीं करता है। एज आई सेड कि हर नंबर की अपनी एक क्वालिटी है। आपको ये देखना है कि मेरे पास नेचुरली क्या क्या क्वालिटीज अवेलेबल है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से नंबर्स अवेलेबल है। तो हर नंबर की एक क्वालिटी है, हर नंबर आपको एक नेचुरल वाइब्रेशन देता है। अगर आपके पास 4 नंबर है तो मतलब आप एक नेचुरली आपके अंदर एक वो दुनियादारी प्रैक्टिकल वाला जो एक माइंडसेट है वो है। तो आपको वो सीखने सिखाने की जरूरत नहीं है, आप पैदा हुए हो वो माइंडसेट लेके। अगर आप में 5 नंबर आता है कहीं पर तो इसका मतलब नेचुरली यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड ऑल दैट। आपने अगर कभी नहीं की, अगर आपने वो ट्राई नहीं किया है, तो इट इज जस्ट लाइक अ डोरमेंट स्किल। कि जैसे मान लो कि मेरे को भगवान ने बहुत अच्छा गला दिया, मेरी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने कभी गाना गाया ही नहीं, मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया गाना गाने का। तो इट्स जस्ट अ डोरमेंट स्किल दैट आई हैव बट आई नेवर यूज्ड इट। तो अब वो तो एक अलग चीजें हैं, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, बट एग्जाम्पल इस एंगल से देखना है कि न्यूमरोलॉजी के नंबर्स को तो हम पेपर पे लिख के देख सकते हैं ना कि कौन कौन सी एनर्जीज मेरे फेवर में ऑलरेडी हैं। ये वाली तो मेरे को ऑलरेडी मिली हुई है, वो तो अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो वो तो मेरी ही गलती है। दैट्स अ डोरमेंट स्किल आई ऑलरेडी हैव। I have good leadership skills, or I have good emotional empathy available to me. I have good communication skills available to me. I'm a practical person. So ये सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि इसको मैं यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ। तो न्यूमरोलॉजी इज अबाउट दैट। और फिर जो जो भी नंबर मिसिंग है वो सिर्फ इतना है कि वो एडॉप्ट करना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। तो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी 5 नहीं आता है एंड यू आर इन अ प्रोफेशन दैट रिक्वायर्स यू टू बी अ गुड स्पीकर, गुड कम्युनिकेटर, तो फिर आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, क्योंकि काम तो करना है, जॉब तो है और वो चीज तो करनी पड़ेगी। तो उसमें थोड़ी मेहनत लगेगी और वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरली नहीं आ रहा है। तो बस ऐसे देखना है इसको। इट्स नॉट अबाउट कि अफेक्ट का जो लैंग्वेज हमने यूज किया है, अफेक्ट की लैंग्वेज सिर्फ वहां यूज की है जहां पे नंबर की इंटेंसिटी ज्यादा है, 2 से ज्यादा होने लग रही है। तो 2.5 हो गई है, 3 हो गई है, 4 हो गई है, 4.5 हो गई है। जब वो 2 से ज्यादा होने लग रही है किसी भी नंबर की इंटेंसिटी, तो वहां पे मैनेजमेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी। और वो मैनेजमेंट टेक्निक ऐसा नहीं है कि उसका कोई टेम्पलेट नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बोलूं अच्छा ये है तो ये कर लो, ये है तो वो कर लो। इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट हैज टू बी लुक्ड in combination with other numbers also. It has to be looked into कि आपके ये भी एनर्जीज हैं, ये भी एनर्जीज हैं, इनको मैनेज करने के लिए क्या मैनेजमेंट टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो उसको ना, ये सब चीजें कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती है। अगर ये फॉर्मूला बेस्ड होती तो फिर उसकी कोई ऐप बन जाती और उसका कुछ हो जाता वैसा, क्योंकि ऐसा नहीं है। इट इज टू बी कैलकुलेटेड।
by considering. So there is a lot of permutation combinations that are there to be looked into, and many things which are gray. तो हर चीज को इतने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं समझाया जा सकता है। इसमें कई सारी चीजें होती हैं अ, जो कई बार ऐसे बात करते करते याद भी नहीं आती कि ये भी थी, लेकिन जब आप किसी का चार्ट प्रिपेयर करते हो, जब देखते हो तो याद आता है, अच्छा हाँ इसमें तो ये भी वेरिएशन है, इसमें तो ऐसा भी है। तो इसलिए ये चीजें ऐसा नहीं है कि अच्छा अब हमने वन के बारे में भी सीख लिया, टू के बारे में भी सीख लिया, तो अभी तो ये हो गया, अभी वो हो गया। ये सब डीआईवाई करने वाली चीजें नहीं होती है। ये सब चीजें कोई एक्सपर्ट से, अगर आपको इंटरेस्ट है तो अप्रोच एन एक्सपर्ट एंड गेट योर चार्ट डन एंड चेक विद देम कि क्या करना है, कैसे करना है। ये मैं तो हमेशा से एक ही एग्जांपल लेता हूँ, हर चीज में मैं यही बोलता हूँ कि यू कैन रीड बुक्स एंड एक्वायर नॉलेज, एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आओगे? तो जो लोग फील्ड में हैं, जो लोग ये काम 10 15 20 25 साल से कर रहे हैं, वो रोज के 100 लोगों को देख रहे हैं, 100 चार्ट्स बना रहे हैं, और 10 साल से उन्होंने हजारों चार्ट्स बनाए हैं। ऑल दोज एक्सपीरियंस दैट दे हैव। आपने तो अभी अभी एक बुक पढ़ी है, 2 बुक पढ़ी है, आपको तो अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपने तो अपना चार्ट भी नहीं बनाया अभी तक। तो वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे? तो इट्स दिस टू मेनी वेरिएशंस। सो इसको, इसलिए मैं इस कॉन्वर्सेशन में नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि ये क्लास की तरह नहीं किया जा सकता इस चीज को। तो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट टू 2024 कि हाँ ये ईयर ऑफ शनि है, और इस साल हमको क्या देखना है, किस चीज के बारे में अवेयर होना है, किन चीजों को ध्यान में रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे ही फोकस रखते या रखना चाहता था। खैर उसके बारे में तो हमारी बात हो ही गई है। तो तो बस हाँ, इतना देखो कि आप नंबर्स के बारे में आप यूट्यूब पे, गूगल पे आप सर्च मार सकते हो कि वन का क्या मतलब है, टू का क्या मतलब है, वो कर सकते हो। अपने चार्ट में देख सकते हो कि कौन कौन सी एनर्जीज, कौन कौन सी वाइब्रेशंस आपको नेचुरली अवेलेबल है, और क्या क्या आपको नेचुरली अवेलेबल नहीं है, और उसको अडॉप्ट करने के लिए अब आपको क्या अप स्किलिंग करनी पड़ेगी। दैट इज योर पर्सनल ग्रोथ एरिया। कि अब ये है, अब ये आई हैव आइडेंटिफाइड कि पर्सनल ग्रोथ के लिए अब मेरे को ये चीजें करनी, ये नंबर्स मिसिंग है, ये दिस इज माय पर्सनल ग्रोथ एरिया। तो दैट्स वन। सेकंड, कि जब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं और उनकी इंटेंसिटीज ज्यादा हो रही है, तो यहां पे कंसल्टेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू। कंसल्ट समवन कि इसका क्या करना चाहिए। ये खुद से नहीं कर पाओगे। ठीक है, Yeah, thank you. Thanks a lot. नो प्रॉब्लम्स। यस, किसले किसले कुछ बोल रहे? हेलो अकरमा, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसे हो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। मैं भी मैं ये कह रहा था कि मेरे पूरे डेट ऑफ बर्थ में वन नंबर 3 बार आता है, लेकिन मेरा जो हाँ, सम ऑफ द नंबर है वो 6 है। तो किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है मेरे ऊपर, ज्यादा जो मतलब जैसे ज्यादा हावी है एक तरीके से? तो ट्रिपल वन मुझे ज्यादा लगता है, ज्यादा हावी लगता है। ये कई बार मैं अपने आप में रिजिड हो जाता हूँ, ये मैंने अपने आप में भी देखा अभी। तो हाउ कैन आई कोप अप विद इट? हाउ कैन यू व्हाट? हाँ, हाउ कैन आई वर्क? हाँ वही तो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि ये चीजें, ये आंसर ऐसे करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए चार्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। सो ये चीजें ऐसा, ये ऐसे अभी ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर वाला नहीं है, क्योंकि आई डोंट इवन नो योर डेट ऑफ बर्थ फुल। आई हैव टू लुक एट अदर थिंग्स एंड प्रिपेयर द चार्ट एंड ऑल दैट। सो ये चीजों का आंसर ऐसा ऑन द स्पॉट देने वाला नहीं होता है। जिन चीजों का मैं ऑन द स्पॉट दे सकता हूँ वो मैंने दिया, कि जो चीजें मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, यहाँ ये सब चीजें खुद से कर सकते हो, ये सब देख सकते हो। जो चीजें
ये चीजें सिखाने वाली नहीं है। सिखाने के लिए मतलब इन द सेंस ऑब्वियसली हमने भी सीखा ही है, लेकिन ये चीजें अभी 15 मिनट की कॉल पे सीखने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। There's too much to learn to understand the answer. So it's not something which I can just give you the answer like that. So जो मैं दे सकता था वो तो मैंने दिया, बट इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ इसका आंसर पाने के लिए? वही तो मैंने बताया ना कि अगर कोई नंबर की इंटेंसिटी ज्यादा है एंड यू वांट टू नो कि उसकी इंटेंसिटी को मैनेज कैसे करना है, तो यू टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम समवन। थैंक यू if वेरी मच। if you want to ask me and all that, then you message me, क्योंकि ये ऐसा ये वन ऑन वन करने वाली चीज है, ये ऐसा ग्रुप में करने वाली चीज नहीं है। ओके, ओके, आई कैन मैसेज यू, आई विल मैसेज। हाँ हाँ, या श्योर। यस चेतन। First of all, really thanks for this session. And actually, I just got to know very crucial things when it comes to their life and in numerology itself. I'd like to ask a question that is kind of somewhat personal and kind of a professional in my life. That in last my 26 year, I actually focused on only on the professional and almost a public image life myself. But the issue is my personal life is so it is actually numerology is driving force on me, or I'm doing some kind of wrong things to my life that is producing that kind of effect. Because as of now, it is getting heavy toll when it comes to my physical as well as the mental health. Yeah. Once again, this question is for a one-on-one consultation. This is not a question, क्योंकि like I said कि इसके लिए चार्ट प्रिपेयर करके देखना पड़ता है। तो दिस इज नॉट सो। अगर एक ओवरऑल आंसर चाहिए तो ओवरऑल आंसर गेस वर्क विल बी यस, दीज थिंग्स डू अफेक्ट ऑल दीज थिंग्स, बट इफ यू वांट टू नो हाउ दे आर अफेक्टिंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन, तो उसके लिए तो चार्ट प्रिपेयर करना। Okay. Okay, got it. Yes. If yes, if I can, I will I will contact one-on-one call shortly. श्योर, नो प्रॉब्लम्स। कुछ चीजें हैं जो हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं, लेकिन जो पर्सनल पे ऐसे वन ऑन वन पे आती है कि मेरे चार्ट में ये है, या ऐसा हो रहा है, या वैसा हो रहा है, या ये हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ये इश्यूज आ रहे हैं, वो इश्यूज आ रहे हैं, तो वो तो समझने की चीज होती है। वो तो वन ऑन वन कंसल्टेशन की बात होती है। तो वो तो आई ऑल्सो से कि वो आप ऐसे ग्रुप में, दिस इज फॉर एवरीवन, ऐसे ग्रुप में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है ना बताने वाली, जो जरूरी नहीं है कि यू विल बी कंफर्टेबल लिसनिंग टू ऑल दैट इन अ ग्रुप, और आई विल बी कंफर्टेबल टेलिंग यू ऑल दैट इन अ ग्रुप। तो कई सारी चीजें होती हैं। सो थिंग्स, न्यूमरोलॉजी अफेक्ट अस हेल्थ वाइज, sexual intimacy, relationships, career, all these factors are there जो हमें वन ऑन वन समझना होता है। तो इसको दूसरे एंगल से अगर समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट वाइज, तो ऐसे है ना कि कोर और डेस्टिनी नंबर आ गया एक, तो डेट ऑफ बर्थ तो सेट है, सबकी डेट ऑफ बर्थ सेट है, उसमें तो कोई नंबर्स में चेंज हेरा फेरी हो ही नहीं सकती, वो तो सेट है। सबका कोर नंबर भी सेट है, डेस्टिनी नंबर भी सेट है, और भी बहुत सारी होती है चीजें। तो इसके बाद ये कोर और डेस्टिनी नंबर ऐसे समझो कि इट्स लाइक अ फ्रीक्वेंसी, जैसे एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है आपका। किसी का भी, जैसे लेट्स से कि किसी का कोर और डेस्टिनी नंबर आता है 2 और 4, तो ऐसे समझो कि आपका जो
रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 24। तो नेचर ने आपको डिजाइन किया है कि यू विल परफॉर्म वेल व्हेन यू आर अट्यून्ड ऑन दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ 24। आपको कोई गाना सुनना है एफएम पे, 108 पे आता है तो 108 पे ही लाना पड़ेगा ना उसको। 109 पे तो वो गाना ठीक से बजेगा नहीं, 107 पे भी नहीं ठीक से बजेगा, 108 पे ही बजेगा। तो तो रेडियो को फाइन ट्यून करके उस पे लाना होता है, तभी वो गाना बजेगा। तो न्यूमरोलॉजी टेल्स अस कि व्हाट इज योर डिजाइन, और आप अगर उस डिजाइन पे वर्क नहीं कर रहे हो, अगर आपकी लाइफ मिसअलाइंड है, आपको रिलेशनशिप्स में इशू आ रहा है, सेक्स की लाइफ में इशू आ रहा है, करियर में इशू आ रहा है, हेल्थ में इशू आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप वो फ्रीक्वेंसी से हट के कहीं पे बज रहे हो। तो वो कैसे हटे, वापस से उसको अलाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और ये सब तो सब चीजें देखनी पड़ती है, काफी चीजें डिस्कस करनी होती हैं उसमें कि क्या रीजन है जिसकी वजह से आप उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो जिस फ्रीक्वेंसी पे नेचर ने डिजाइन किया था आपको। तो वो वन ऑन वन की बातें होती हैं सारी। ठीक है, चलिए, आई थिंक लेट्स रैप अप। सो I no other questions, then let's wrap up. It was a good call. I hope that you guys got the answer. So the main core message for 2024 is that this year is all about taking actions. This year is not about procrastination. This year is not going to be about not being organized, not being disciplined, not taking the decisions that you need to take. और जिन चीजों में पहले से फंसे थे उसी में फंसे रहोगे इस साल भी, तो ये ईयर बहुत पेनफुल हो जाने वाला है। और जिन लोगों को इसमें कोई इशू नहीं है, those who are good, then this year can be very prosperous for you, and you align yourself with the energy of this year, and then you can achieve really good outcome in your personal and professional life. And if you so overall मेरा मैसेज यही है कि 2024 में सक्सेसफुल होने के लिए 2024 कैन बी अ ईयर विच कैन बी वेरी हाई फॉर सम पीपल एंड वेरी लो फॉर अदर पीपल। तो ये बीच में एवरेज ईयर नहीं जाने वाला है। ये ईयर या तो बहुत ही हैप्पी होगा लोगों के लिए या बहुत ही पेनफुल होगा। तो एवरेज तो नहीं जाएगा, एवरेज रहोगे तो पेनफुल ही होने वाला है। तो द क्विकर यू ग्रैस्प दिस मैसेज, अभी एक महीना तो चला गया है, 11 महीने बचे हैं। So the quicker you grasp this message, the quicker you get on board and you take the actions that you need to take and you come in alignment. तो अभी 11 महीने हैं कुछ उखाड़ने के लिए। Otherwise things can become very uh, painful for some people. तो जहां आपको मालूम है कि ये आपका वीक पॉइंट है, तो अब उस वीक पॉइंट पे कुछ करने की जरूरत है। तो learn some time management techniques, learn fast decision making, पुश करो अपने आप को एक्शंस लेने के लिए, अलार्म लगाओ, रिमाइंडर्स लगाओ, नोट्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, ये सब करो, प्रायोरिटाइज करो चीजों को। ये सब करोगे तो ये साल अच्छा निकलेगा, नहीं तो बहुत ड्रैगिंग हो सकता है। With this, I'll end the call on this note, and I hope was this helpful today, this conversation, what we discussed? Yes, Akarma. It was very helpful, and you actually summarized all the things. I was not aware of the numerology, but you actually precisely explained everything and everything about the year as well. Thank you. No problems. Thanks guys. All right, so all the best, and अगर किसी को पर्सनली वन ऑन वन कंसल्टेशन चाहिए अपने किसी मैटर पे, तो जस्ट मैसेज मी,
then we will take it from there. I don't really do this in a group as such. और ये on the spot करने वाली चीजें है भी नहीं, because I also need time to prepare chart and then discuss. So um, so that's what I practice. So like I said कि मैं ये professionally तो semi professionally बोल सकते हो इसको, as such ऐसा भी नहीं है कि everything. So this is a what we call, these are occult sciences जिनको बोला जाता है occult sciences, as astrology, numerology, palmistry. All these are occult sciences which are done on the basis of a dakshina. Fees is there. So without that we are not मतलब ये हमारी ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है कि we are not supposed to be giving one-on-one advice to people without a fees. तो वो एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है. एनर्जी एक्सचेंज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि व्हाट इज देयर. हाँ, आई डोंट डू दिस प्रोफेशनली एज सच. मैं इसको कुछ एडवर्टाइज नहीं करता हूँ कि आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई डू दिस. People who know that I do this, they approach me, do that, and all that is there. So one-on-one consultation का वैसा सेटअप रहता है. ठीक है. So great. Thank you everyone, and I hope that you can make good use of this information for this year. So all the best and good night. Good Everyone, night. good night. We'll see Good you night. all Thank you. again. Good night Bye. everyone. Thank you. Good night, Bye. everyone.